Assalamu alaikum. This is Waqas Khan from California. I'm with Alif USA. We are doing our podcast, which is called TechCast for number 3 preset. We are here talking to Mr. Anwar Khan, who is an entrepreneur and has done many fintech startup companies. And we will talk to him about his life and his technical journey. Assalamu alaikum, Anwar. वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मुझे आपसे ये पूछना था कि अपनी जर्नी जो आपकी शुरू से स्टार्टिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, ज़रा सा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल। मैं तो लाहौर से पला बड़ा और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने एफएससी की और उसके बाद ज़ाहिर है उस ज़माने में ये 1975 की बात है। उस वक़्त यूटी लाहौर जो है ना वाज दी यूनिवर्सिटी टू बी इन। तो हम एफएससी की तैयारी भी उस वक़्त ऐसा कर रहे थे कि हमारे इतने मार्क्स अच्छे आए कि हम यूटी लाहौर में दाखिला हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो आ भी गए और 1975 में, जबकि उसमें 1974 और 75 का दोनों ईयर्स का जो है वो कंबाइन एडमिशन हुआ था और यूटी लाहौर ज्वाइन किया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ज्वाइन किया। अच्छा, वेरी गुड। तो उस ज़माने में भी ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लाहौर में मेरिट के डायनामिक्स उसी तरह थे जैसे कि हमारे ज़माने में उसके बाद हुए? हाँ बिल्कुल, उस वक्त तो बहुत टफ होता था और बहुत सारे इट्स अमेजिंग, आई थिंक इट हैपेंस टुडे एज वेल। बाज़ का मेरिट के चक्कर में आप यू एंड अप टेकिंग अ डिफरेंट डिसिप्लिन। आप चाह रहे होते हो इलेक्ट्रिकल में करना, यू एंड अप इन XYZ, sometime in chemical, sometime I don't want to जी word जी it in a way, but जी। that's the alhamdulillah, at least there are a lot more universities now in Pakistan. जी। And there are a lot of good universities and जो कि हाई रेपुटेबल लाइक नस्ट है और लम्स है और फास्ट है और GI के है। सो आई थिंक दैट्स अ गुड न्यूज़। देर आर मोर ऑप्शंस अवेलेबल एंड ऑब्वियसली देर आर लॉट मोर पीपल हु अप्लाई फॉर, बट हम तो यही चाहेंगे कि यूटी लाहौर के ज़माना होते हुए कि यूटी लाहौर का भी अपना एक मुकाम हो पाकिस्तान में और दुनिया में। तो जी बिल्कुल सही है। वो तो उसकी तो कोई उसमें कोई तमीज़ नहीं है, क्योंकि 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और हमेशा से नंबर 1 टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी रही है। अच्छा, तो जब आप यूनिवर्सिटी में गए तो आपकी क्लास का साइज क्या था उस ज़माने में? हाउ वाज द टीचिंग व्हेन यू गॉट इनटू योर इनिशियल स्टडीज़? अच्छा, उसमें ये था कि पहले 2 साल जो है वो ज़ाहिर है आपके पास बहुत सारे कॉमन कोर्सेज होते हैं। जी और उसमें जो कॉमन कोर्सेज वाले जो हैं, फिजिक्स का हो गया या इस्लामिक स्टडीज़ का हो गया या इकोनॉमिक्स का हो गया, तो वो क्लासेस ज़रा बड़ी होती थी। वो तो हर यूनिवर्सिटीज़ में होता है। जी यहाँ पे US यूनिवर्सिटीज़ में भी मैं वही देखता हूँ कि बाज़ का तो 100 से ज़्यादा होते हैं। बल्कि वहाँ पे हमारी यूटी में, उस यूटी लाहौर में आई थिंक वाज 50 to 60 पीपल इन अ क्लास फॉर दोज कॉमन कोर्सेज। जी फिर सेकंड लेवल आता था कि भाई आपकी इंजीनियरिंग से ताल्लुक कोर्सेज होते थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, जैसा EMI थ्योरी हो गया और दूसरे जो बेस लाइन कोर्सेज होते हैं आपकी इंजीनियरिंग की तरफ हेल्प करते हैं, मैथ का हो गया, यानी कैलकुलस वगैरह हो गया। तो वो जो है वो आई वुड से अबाउट 30 to 40 पीपल। और फिर जो तीसरा होता था कि भी हमारे अब आजकल मुझे मालूम नहीं कैसा है, उस ज़माने में आप पावर में जाते थे, पावर सिस्टम में जाते थे या टेलीकम्युनिकेशन में जाते थे, ठीक है। और उस वक्त 1975 में तो कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट नहीं था इतना कि भाई आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करो या कंप्यूटर साइंस करो। तो उस वक्त मैंने चूज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह टेलीकम्युनिकेशन जाने में, और इसी में इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल होता था। तो अच्छा उसको ना सीखा, तो उसमें थोड़ा सा और थोड़ा कम, आई वुड से 25-30 पीपल ठीक। उसमें ज़्यादातर मैं देखा। जैसे हमारी डिजिटल सिस्टम की क्लासेस होते थे, नईम वसीम अजहर करते थे, बहुत ही पॉपुलर हमारे टीचर अच्छा, थे। वसीम अजहर से आप पढ़े हुए हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, और अब तो अच्छा, वेरी मुलाकात भी गुड। होती है उनसे मेरी जुमे को, यहाँ पे मस्जिद में यहाँ पे ही होते हैं अच्छा सिलिकॉन वैली में। ही इज़ अ प्रोफेसर एट UC बर्कले। जी जी जी। बिल्कुल, मार्केटिंग में पढ़ाते हैं आजकल। तो यस, वसीम अजहर से बिल्कुल। अशर इकबाल, अच्छा, वसीम अकबर, अरशद वसीम इकबाल। अजहर, ये दोनों जी यूज्ड टू बी माय टू ऑफ द रियली फेवरेट
जी जी। प्रोफेसर फिर एक होते थे, मौलवी सलीम साहब होते थे। मौलवी सलाम, हाँ। बिल्कुल। और डॉक्टर नूर मोहम्मद जो हैं, वो तो अभी भी माशाल्लाह, आई थिंक आई मेट विद हिम एज वेल, आई वाज इन लाहौर लास्ट टाइम। तो वो कम्युनिकेशन पढ़ाते थे, डायरेक्ट जी कम्युनिकेशन जी। पढ़ाते थे। आपने सारे वही नाम लिए जो कि उसके बाद हम 5 साल बाद गए थे तो हमें भी वही नाम बिल्कुल। हमारे साथ थे। ऑल्दो वसीम अजहर had लेफ्ट, बट वो आके हमारे साथ क्रिकेट मैचेस खेल लेते थे। अच्छा, अ, उसके बाद आपने अपनी इंजीनियरिंग की, एंड देन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? डू यू स्टार्ट अ जॉब इन तो लाहौर वो या चार आप साल, यहाँ पे आ गए? हाँ, तो जब 4 साल कंप्लीट किए, 5 साल में हुआ क्योंकि पॉलिटिक्स के चक्कर में 1 साल ज़ाया हो गया था। जी जी। और मई 1980 में जो है मेरा कंप्लीट हुआ था। और उस ज़माने में कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि वो हमारा कॉन्वोकेशन भी नहीं हुआ, और जो हम्म, हमें डिग्री जो प्रॉपरली फॉर्मली दी जाती है वो भी उस तरह नहीं मिली। ये 1980 की बात है। लेकिन बड़ा शौक था कि आगे पढ़ने का, कि मास्टर्स करेंगे और पीएचडी करेंगे। तो उसके सिलसिले में फिर मैं यहाँ पे यूएस आ गया, मास्टर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मास्टर्स में ज्वाइन किया। जी जी। And in fact, I got admission in many different schools, but I decided to join the University of Hawaii in Hawaii due to a couple of reasons. And one reason is University of Hawaii had a very good electrical engineering satellite program, and also I used to get professors, visiting professors from MIT and Harvard, because being in Hawaii, professor used to cycle for a couple of years and everything. So it really worked out well for me. And I did my master's from University of Hawaii. And just to complete that cycle, when I was finishing, Allah Ta'ala ka karna hai कि I was introduced into this guy, Bill Melton, who has his own startup. उसमें 2-3 employees थे इस वक्त. And he met me, and then a few minutes later said, Khan, people, they call me Khan, and he's called me Khan as well. That's come over, join his company startup. और फिर मैंने स्टार्टअप ज्वाइन किया। मैं फिर शेयर करता हूँ उसको क्या हुआ उसके बाद, लेकिन जी जी। दैट्स एग्जैक्टली तो व्हाट आई वेंट थ्रू। सो बिल मेल्टन और उनकी स्टार्टअप जो थी वो हवाई में थी या कहीं और पे थी? नहीं नहीं, वहीं पे थी, वहीं से शुरू वहीं हुई पे थी। थी। अच्छा बिल मेल्टन भी यूनिवर्सिटी हवाई में गए थे। वो उन्होंने अच्छा। उन्होंने एशियन कल्चर में किया था मास्टर्स। और एंड ही वाज अ वेरी विजनरी गाय। हम्म, एंड तो उनकी स्टार्टअप, एंड जैसा अल्लाह ताला का करना होता है। एंड दैट्स हाउ आई वाज पुट इट ऑन अ जर्नी ऑफ टुवर्ड्स स्टार्टअप्स। बिल्कुल सही। तो ये तो बहुत अच्छा है कि आदमी शुरू में ही उस रास्ते पे लग जाए, जो बिल्कुल कि एक दूस नॉर्मल बड़ी कंपनी में जाने के बजाय आप ऐसी जगह पे गए जहाँ पे एक स्टार्टअप कल्चर था। सो वो उससे ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है। सो बिल्कुल। उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अच्छा, तो जब आपने जो स्टार्टअप जॉइन की, तो ये क्या कर रहे थे? अच्छा, व्हाट हाँ, व्हाट ये वर दे बहुत मेकिंग? इम्पोर्टेंट है। जी, देखिए, 2-3 चीज़ें हुई। एक तो अल्लाह ताला ने, मैं तो ये अल्लाह ताला के ज़रिया बनाता है वो, कि स्टार्टअप जी। मैंने ज्वाइन किया जरिए। और वो उसमें जब एम्प्लॉय नंबर में जब था पार्ट टाइम ज्वाइन किया, उसको एम्प्लॉय नंबर 4 था। ये है अच्छा। नवंबर 1983 की बात है। हुँ, और और देन वी आई स्टेड विद दैट स्टार्टअप फॉर 15 years। वी वर्क वेरी 15 हार्ड। इयर्स। 15 years वी वर्क अच्छा। वेरी हार्ड। मुझे याद है अच्छी तरीके से कि उन दिनों में जब मैं ज्वाइन किया, और विद इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स जब मैं था वहाँ पे कंपनी में, वी यूज टू वर्क 18 hours a day, 7 days a week। एंड ये होता ना, कभी आपके जो ना ऑल पैशंस ड्राइव कर रहा होता है, और आपकी क्रिएटिविटी चल रही होती है, तो वो जो है उस ना फेज से मैं गुजरा हूँ। और एंड basically we turned that very little small startup into very successful big organization called Verifone. अच्छा, Verifone वेरी जो फाइन। है, eventually that during the 15 years I was there in 1991 went public as well. And today, it was the last time it was acquired was $4.5 billion. So we were one of the first unicorn of fintech बिल्कुल। नहीं, globally. वेरीफोन का नाम तो सबको पता है। सो इसमें अब 2 चीज़ें Hmm. आपकी इस बात से 2 चीज़ें निकलती हैं। एक तो ये कि और हम वेरीफोन के ऊपर आते हैं एक सेकंड पे और फिनटेक पे। पर उससे पहले यंग बच्चों के लिए ये बात बहुत अहम है कि जब आप स्टार्टअप में जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी एक फ़र्क तरीके से गुज़र रही होती है। आप
सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी सिर्फ आपके एरिया की नहीं होती हैं, उसमें कई चीज़ें होती हैं। स्पेशली अगर आप एम्प्लॉय नंबर 4 हैं तो आप तो फ्लोर भी साफ करते हैं और आप कोडिंग भी करते हैं और आप मार्केटिंग भी करते हैं और आप सारा कुछ करते हैं। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, इसके बारे में जरा बताइए। बिल्कुल, you said it very right, क्योंकि you wear different hats during that time and you are become so passionate because important चीज़ होती है स्टार्टअप की कि विजन क्या है। तो वो जैसे मैंने बताया कि बिल मेल्टन, he was a very visionary guy and he saw that the electronic payments or card payment would be huge over time, and that's what we were working on, how to make the card payment, credit card, debit card payment. At that time, debit card was not there, and but the credit card payment highly successful. आपको थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा फ्लेवर दे दूँ, उस ज़माने में अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते थे, मर्चेंट्स बहुत थोड़े मर्चेंट एक्सेप्ट करते थे, जैसे आजकल पाकिस्तान में भी है, लेकिन उनके पास एक छोटी सी नेगेटिव लिस्ट होती थी, उसमें वो कार्ड नंबर देखते थे, कहीं उसमें है तो नहीं है, तो वो है नेगेटिव लिस्ट, तो फिर वो इसका मतलब कार्ड अच्छा नहीं है। तो इट्स यूज टू टेक टाइम, राइट। और फिर हमने जो प्रोडक्ट बनाई वो यही थी कि अभी आप वो कार्ड स्वाइप करो एंड वुड टेल यू इंस्टेंटली कि अभी वो नेगेटिव लिस्ट में पड़ा है कि नहीं पड़ा, और जस्ट बेसिकली स्पीड ऑफ दैट ट्रांजेक्शन व्हाइल यू आर स्टैंडिंग इन द क्यू एट अ चेकआउट। तो वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा सक्सेस हुआ। हमने उसका नाम जॉन जूनियर रखा था एंड बिकेम ए ह्यूज सक्सेस फॉर वेराफोन। एंड उसके बाद बहुत सारी प्रोडक्ट्स की। अच्छा, जो मैंने 15 साल जो गुजारे वहाँ पे, मैं यूँ समझ लें कि मेरे पहले 5 साल थे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में थे। उसमें मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी की, उसमें मैंने मैनेज की इन अपने हाई एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम को, और वो पहले 5 साल किया। जब हम 5 साल वो कंप्लीट हो रहे थे, ये है 1989 की बात है, तो उस ज़माने में हम यूएस में काफ़ी एक्सपेंड करना शुरू हो गए थे। हम चाह रहे थे कि अब यूएस से बाहर भी जाएं, दुनिया में भी उसको लेके सोल्यूशन जाएं। सो देन आई बिकेम हेड ऑफ द प्रोडक्ट फॉर इंटरनेशनल, तो जिसको बोलते हैं ना प्रोडक्ट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मार्केटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है। देन आई टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड 5 साल वो किया फिर मैंने। I was head of the product, so as we took Verifone, I literally was involved and directly responsible taking products into almost 100 countries around the world over those 5 years. और ये बात हो रही है फिर 1994 की। फिर मैं हेड ऑफ सिक्योरिटी बना फॉर वेराफोन, और वही उस ज़माना था कि जनवरी 1995 में, देन आई वाज इन अ बिल मेल्टन, ही लेफ्ट बाय देन, आई वाज इन अ conference called RSA conference in Redwood City. By the way, RSA conference is huge now. It was a very small conference. वहाँ पे बिल मेल्टन, he stood up and he talked about how internet is going to be huge. ये है जनवरी 1995 की बात। Or huge, and then I really clicked on it, that thing, that if internet was going to be that huge and we were the leader in the payment, already in the physical point of sale, that means for e-commerce transaction, transaction over internet, Verifone has to play a role in it. So I wrote a white paper and then gave it to my management saying that we must need to go internet payments. And that's what I drove that internet payment business in Verifone. And that was the reason, that HP came in and bought us out, because we were, one other thing which I did was, because we were a hardware company at that time, and all these big organizations, they want to go to internet payment transaction or internet commerce transactions. And we needed a partnership. So I partnered with Hewlett Packard, and Hewlett Packard with the Verifone was winning against the IBM Payment Gateway consistently. I remember that 24 different large accounts in 24 different countries with the leaders in those countries, we were winning. And so HP and Hewlett Packard saw that thing, and that was one of the reasons they acquired Verifone for $1.2 billion in 1997, April 1997, then when they announced. In fact, I was in Singapore, then I was came onto the Singapore TV announcing that and answering those questions about that acquisition. So that really was, just macro level पे basically that journey was over those 15 years. ये तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आपने एक ही स्टार्टअप में, बिकॉज यू आर एन अर्ली एम्प्लॉई, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, आपने
प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, आपने इंटरनेशनल एक्सपेंशन की, आपने उसको ट्रांजिशन किया टू द नेक्स्ट फेज ऑफ हाउ पेमेंट्स वर मेड. सो उनके टर्मिनल्स होते थे जो अब हम देखते हैं स्ट्राइप के या कुछ और लोगों के. उस वक्त पहले तो सारे इन्हीं के टर्मिनल थे, वेरिफोन के एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. ओके, सो दिस स्टोर्स इज में वेरी तो वेरी अभी भी इंटरेस्टिंग. सो 15 साल की आपकी जर्नी थी, आपने बहुत सारी. जी जी. मैं ये कह रहा था कि फिजिकल स्टोर्स में तो अभी भी वेराफोन तो का बहुत बड़ा 15 साल की मार्केट शेयर जर्नी है. के बाद, उसके बाद नहीं नहीं, मैं अभी थोड़ा सा एक दो तीन चीज़ें बहुत शेयर कर दूं जो 15 जी साल की जर्नी की जो जो मेन एसेंस है जो मैंने सीखा, वो आई वुड लाइक टू शेयर दैट थिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑडियंस, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स जी. के लिए, यंग यूथ के लिए. एक तो चीज़ एक तो चीज़ ये है कि स्टार्टअप इज अ जर्नी विच ड्राइव्स योर एनर्जी बिकॉज यू आर इन अ क्रिएटिविटी मोड. You are part of the core team that's is making new things happen. When you are onto that path, your passion, your energy level, your creativity level is very, very high. And that is one of the reason I believe that a startup culture जो है is so important for any country to succeed highly in the world. तो एक नंबर वन ये था कि जो मैंने पिक किया. नंबर दो जो है वो मैंने जो सीखा वक्त के साथ जो है, एंड दैट्स व्हाट आई बिकेम वेरी गुड इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड ड्राइविंग प्रोडक्ट्स, कि एक माइंडसेट बनाना होता है आपको कि भी कैसे आप स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड यू, especially within the industry where you want to focus on how things are happening, how things can be improved, and if the things can be improved, how you can provide a solutions to improve those things or so. So I strongly believe that, in my view, you don't need to be born with a very high IQ to succeed in life, but you have to establish a certain mindset that drives intellectual thinking, that drives a intellectual critical thinking, and that drives that a success is two, three factors. One is to be able to observe things around you and work on finding a solution to those things that can be improved or that can be fixed, number one. Number two, have a passion and perseverance, a desire or to make it happen. There will be up and down. There were many days in Verifone, those 15 years, especially early days, we thought there is no tomorrow. But however, we went through that thing and succeeded that. And that required that our perseverance जो है वो बहुत ज़रूरी है कि don't give up. And that drives, towards success in my view. And the third thing is you have to think macro level. कि भी जितना आप बड़ा सोचोगे कि भी ये ना देखें, प्रॉब्लम जो है दुनिया में कॉमन डिनोमिनेटर फैक्टर, क्योंकि ह्यूमंस तो आर द सेम. ठीक है, वो they are from different country, different color, different language, it doesn't matter, but the human natures are the same. So the main issues or the main problem you solve, you can think about this, how it can solve the problem for the rest of the world. जितना आप उसको बड़ा टारगेट मार्केट करोगे उतनी ही ज़्यादा उसकी जो अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा आसान होता है बड़े इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना उस आइडिया में. तो ये बड़ी चीज़ें जो है ना वो मैंने वेरीफोन से सीखी. और क्योंकि मैं ग्लोबल हेड था उसका प्रोडक्ट्स का, understanding the global view and how various different countries you can work with, and that's obviously became a icing on the cake. Excellent. So वही बहुत बहुत अच्छे मशले राह हैं लोगों के लिए जो आपने बताए. वेरिफोन के बाद, वेरिफोन को आपने फिर उसके बाद जब 15 साल आपके हो गए, तो देन व्हाट हैपेंड? हाउ डिड यू लीव वेरिफोन इफ यू सही डिड? है. अच्छा, वेरीफोन के 15 साल के दौरान जो है, being on the head of the products, I got introduced into स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजी. जब हम लोग फ्रांस में वेरीफोन को लेके जा रहे थे, France, French people, they had invented a smart card concept. They were using that thing for a prepaid phone, which became if you remember that thing, there was a prepaid phone card you used to plug into the public phone. It's been a long time now, but however, that was the reality. But at the same time, they also started using smart card in the payments. So they used to have a CPAD card they were using for a local payment with the smart card. So that was a technology that I had to learn on one side. And then I saw that it was applicable to globally as well. So I brought it back to Verifone, and we developed the products. In fact, and we did an OEM deal using somebody existing, an OEM partner in France, and then we developed our own product, and we took that product to Singapore first. And I worked with DBS Bank, and we did Takashimaya
department stores, first loyalty system with the smart card. But the point I want to make is I introduced smart card technology to Verifone through Verifone. Then we took it to, it was picked up by Visa and MasterCard as well. And now, if you remember that most of your card, you insert that card, and that has become globally. So this process started while I was at Verifone. So when I left Verifone, this is 1998 time frame or so. And then to me, ये उस वक्त internet boom हो रहा था. So I got engaged into another startup I was helping in China as a B2B startup, which was a competition to Alibaba. And in fact, and was very well invested by Metro Group, and then was invested by HSBC as well. But then I could not commute every month into that startup. And then I decided that I need to go back into my payment industry and see what's the next big things. And this is around 2001 timeframe. I got together with a couple of other co-founders, and we said, okay, we're going to drive every mobile device, which used to be a feature phone at that time, by the way, mobile device to be payment device. That's how I co-founded another startup, my own startup, which is called VivoTech, to drive mobile payments. And those mobile payments, when we, they were used to be feature phone, and people used to call me crazy. What are you talking about? Turning a feature phone into a payment device. And but I saw that at the same time there was, if you remember, Pilot used to be a tablet device, or PDA used to be called, and saw that thing, that feature phone and Palm device, that tablet will come together. It was so natural. So we started working towards, so we started for a company called Vivo Wallet, and we didn't want to corner ourselves to wallet company only. So we turned that to VivoTech, and that's how we drive mobile payments. So we looked at two different technology. My partner was driving infrared technology. If you remember, that used to be an infrared connectivity in those Palm devices. And I believed in RF technology. And this is also, I would like to share this example. I happened to be in February 2001, February 2002, I was in Shinjuku Station in Tokyo. I saw hundreds of people going through a train system and tapping their card or purses or wallet. Shinkansen pe jaane ke liye. Yeah. This is the technology I need to bring into the mobile to make it mobile as well. And that technology is what we call NFC today. Very good. I drove that thing. I took it to MasterCard. I took it to American Express and Visa. Visa said no at that time, but MasterCard and Amex said yes. So we started working with MasterCard and American Express and VivoTech to enable that. So we enabled the first NFC mobile payment trial with MasterCard in Orlando in December 2002. So within a year, आपने बना लिया. So this is an interesting thing. अब ये इससे कई पैराए निकलते हैं. बच्चों के लिए ये सीखना बहुत जरूरी है. So पहली बात तो ये कि having an open mind for new opportunities. So वो आपने देखी. शिनकानसेन में आप जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, नई चीज आपको दिखी. So एक तो ये चीज हुई. दूसरी ये कि उसको फिगर आउट करना कि भाई इसका इस्तेमाल हमारे चीज में कैसे हो सकता है. सो दूसरी चीज ये हुई. और तीसरा ये कि गेटिंग द राइट पार्टनर्स जिनके साथ आप मिलके उसको इंप्लीमेंट कर सके. और फिर चौथी चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वो एक्चुअल चीज को इंप्लीमेंट कर देना, एग्जीक्यूशन ऑफ द आइडिया. सो चारों चीजें जो है मिलके आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बना देती है. सो दिस इज द राइट steps. Absolutely. You summarize very well. And if I take that, one of the very important factor, जो मैं एक थंब रूल मैंने सीखा और उसको यूज़ करता हूँ, और वहाँ पे भी उसको यही यूज़ किया था, what I call 80-20 रूल. जब आप कोई भी टेक्नोलॉजी और आप डेवलप करते हो और उसको आप बिलीव करते हो कि इसको अब मार्केट करना है, तो यू लुक एट द 80-20 रूल. व्हाट मीन्स कि व्हाट आर द 20% ऑफ द प्लेयर्स that you could partner with that has a 80% of influence, or 80% of transaction, 80% of the marketing, whatever that may be also. And in the payment world, that is, it is US and globally as well. That's Visa, which has a 60% market share, and still has a 60% market share, around plus minus. MasterCard, American Express, Discover, and China Union Pay Card.
this basically, that defines fintech in my view when it comes to the payments side of things. So I went to those three of them, the top three, and that's what happened. And Visa said no. And so my first investor that came in, Alloy Ventures, was a tier one VC. We started working with them. They really resonated with our thought, but they didn't want to write a check until they see traction from MasterCard. So we said MasterCard is responding well. So, okay, when you get a purchase order from MasterCard, we'll write a check to you. And that's exactly what happened. In August, we received our purchase order, and they invested $5 million into VivoTech. So the 2 points I want to make is 80-20 rule, which is very, very important. Second one is when you choose the partners that you want to go with, if somebody is responding, work with them. If somebody is not responding, you can ignore them. They will come back. And 2 years later, same Visa people were calling me that they want to get on board. And I had, I told them, Patrick Gauthier was running the head of innovation at Visa. So I told him that this time you have to write a check to me VivoTech. And they did. And then we made progress with them. But that's very, very important that low-hanging fruits, the one who want to work with, go along with them. Doesn't matter even if they are the underdog, smaller one. In fact, they are more hungry. Third thing, which also becomes important, that investors, this is very important because who wants to go onto the path of a startup? Investors, they want to make money. So bigger the idea is, the larger market they are in. And when you start getting attraction, that's what gives them a comfort. They would write a check. And VivoTech, we had days where many investors, they were calling me that they wanted to invest versus rather than other way around. In the early days, we were after them. In the later days, they were after us. वो टाइम की बात है. टाइमिंग की बात है. और दूसरा बात ये कि आपने क्या आइडिया है और क्या, क्योंकि मोबाइल पेमेंट, as I said, people used to call me crazy. Then people, they're calling me Mr. NFC when they start seeing this was happening. And this is where the difference is. What you believe in, you continue to go after that thing, what you believe in. Even the other people, they are not ready yet. But few investors, they will respond because there are certain visionary investors, they will respond to you and then they will go along with you. So I think to get invested, you have to make your story very palatable, highly desirable for the investors. And that's how you make it, that you're going after a big market, you have a unique solution, and they believe that they will make a lot of money investing in you. Very good. So basically हम ये कर रहे हैं कि आपने चीज़ों को, मार्केट्स को ढूंढा, प्लान बनाया, इम्प्लीमेंट किया, और फिर और लोग आपके डोर को बैंक करने लगे कि भाई हमें भी आप इन्वॉल्व कीजिए. सो बिल्कुल सही है. सो अब ये ज़रा सी ट्रांजिशन देखते हैं कि एक स्टार्टअप की ट्रांजिशन कैसे होती है. सो पहले तो आपने वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा लिया, आपने अपनी प्रोडक्ट बनाई, उसका पहला आपने इम्प्लीमेंटेशन किया, उसको फंक्शनल किया. जब वो हो गया तो फिर आपका रेवेन्यू साइकिल स्टार्ट हो गया. सो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट हाउ दैट वर्क्स सो फॉर अ स्टार्टअप डायनामिक. बिल्कुल. तो एग्जैक्टली जैस अभी जिक्र किया था कि अभी यू स्टार्ट विद द आइडिया विच इज़ यूनिक इनफ एंड हैज़ अ वेरी लार्ज इम्पैक्ट and becomes a good story for investor to invest in. Get invested on that idea. You have to bootstrap first. Bootstrapping, you try to develop an MVP solution or some solution that they can touch and feel, and you get some traction from one of the few customers that you would choose who are low-hanging fruit, who really want to work with you and they want to move forward. And that traction will give a further confidence to the investors to invest in you. But then also gives a further confidence that you are on a good path. Your product is resonating with the intended customer base, and that's what you work towards that thing. That's a part of the whole process. Then you go into this is all part of the go-to-market strategy. Then you work with, in our case, we had to work with the retailers because the retailers are the one who control the point of sale. We decided not to go after the small retailers. We decided to go after the large retailers. And for that as well, we basically, MasterCard will take our story, talk to the big retailers they work with, and they will bring us onto the table. We were a small startup, right? Retailers would not have a confidence on us, but however, they will have a confidence on MasterCard
who already have done the homework with our startup, saying, yeah, if they are on the table with us, then we must be good. So this also were very helpful. And one of the first retailers that MasterCard picked up and resonated with our solution was McDonald's. अच्छा. So it was October 17, 2000, October 17, 1990. I'm just trying to remember the time. 2002 में होगा ना? Sorry, अक्टूबर या 3 में? October 17, 2003. जी. to be exact. So उस पे जो है वो एक प्रेस रिलीज आई, McDonald and MasterCard and Verifone, VivoTech name, our startup name was mentioned in that. And that evening, I received many calls from Visa as well, saying that अच्छा. they didn't want to be left behind. Here is a McDonald's, हमें भी 14,000 restaurants in the US, and how could they be left behind? So I said, yes, and within 5-6 months, we can work together. We can enable you as well. But and that's what exactly happened. But getting these kind of traction gives a really important confidence. And then, many other retailers like Home Depot and deployed our solution, and many other large retailers. But then again, what I call riding the elephants. You have to नहीं, pick. बिल्कुल सही. आपने राइडिंग एलिफेंट वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप छोटी स्टार्टअप हैं तो खुद का बात करना और गेटिंग इनटू स्पेशली अ पेमेंट इंडस्ट्री विच इज वेरी वेरी स्टेड एंड वेरी रिस्क अवर्स, तो उनके लिए आपको अगर जाना है तो अगर आपके साथ एक बहुत बड़ा हाथी आपके जिसके साथ आप जा रहे हैं तो वो आपको दरवाजा खोल देगा. काम तो आपको खुद ही अपना करना है. यू हैव टू स्टिल सेल टू देम बट इट ओपन्स द डोर फॉर यू. तो वो आपने उस वाली स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल किया. बिल्कुल सही बात है. Absolutely. So that's is really the process that really helped us lead successes. And once you started getting successes, and then it has a word of mouth as well, and it's started to grow in that direction. बहुत अच्छे. अच्छा, उसके साथ I should also mention, इसके साथ देखें हम चले थे वीज़ा, मास्टरकार्ड और अमेरिकन ब्रांड के साथ. अब उनके नीचे जो दो चीज़ें आती हैं बहुत इंपॉर्टेंट उस इकोसिस्टम, एक मर्चेंट्स हैं जो जैसे मैकडोनल्ड हो गया, होम डिपो हो गया, मैनी अदर्स वी अनेबल लाइक जैक इन द बॉक्स, मैनी अदर वंस. ऑन द अदर साइड वी आल्सो स्टार्टेड वर्क विद द टॉप इशूअर्स एज वेल. तो जैसा यूएस में जो है वो टॉप 10 इशूअर्स है, दे कंट्रोल 80% ऑफ द कार्ड इशुएंस एंड द ट्रांजेक्शन. So I started working with the Bank of America, started working with the Citibank, started working with the Wells Fargo Bank. So these large banks, again, who was responding that we were working with them. Few were, they by nature they are, latecomers. So we said, okay, we'll just leave them on their side. We just work with who are the more forthcoming. So Citi, for example, Bank of America, they are a lot more forthcoming banks. So we also were working with them, and so because in the mobile payments, not only we had to enable the merchant to be able to accept the mobile payment, we also had to enable the issuers to be able to issue that card, which is now a soft card, over there into the mobile device. And that's how would you get your card, and then you will be able to make a payment. So we were working in this new ecosystem. We developed the products accordingly. We applied patents and everything also. Let me touch on this another important factor. Alhamdulillah, I have more than 50 patents in the US, but globally about 100 patents. And the reason was because this was a new space. Mobile was a new space. And because mobile was a new space, and I was driving this mobile payment as a new application, new value proposition. So we had a lot of new ideas, a lot more easily that we were able to recognize with that concept of observing things around you and see how this could solve a problem using our technology. And that's how I came up with a lot of different ideas. So I'm a strong believer, again, you don't have to have a very high IQ for a physics and those type of things where you have to go into imaginary things and everything. Maybe high IQ is required. Otherwise, it's just a mindset, your passion, that's all it requires. And to be realistic, what's the real problem is, how is that scalable, how is that unique, and how is it? तो बाकी दो तीन चीजें इसमें बहुत हैं. इस दो तीन चीजें बहुत हैं. एक तो ये कि आपने टीम एलिमेंट को जमा किया, राइट? एक नेटवर्क था, एक मर्चेंट था, एक इशूअर था, उसका काम करना पड़ा just to make sure that the whole system is created. दूसरा जो आप बात की वो बहुत अहम है,
जब एक नई मार्केट डेवलप कर रहे हैं तो उसमें आप किसी नई चीजें बना रहे हैं, उनको सिक्योर करना पैटेंट्स एंड एवरीथिंग एल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट गिव्स यू और लोग जो है समझ नहीं सकते जब तक आपके पास कैपेबिलिटी है। This हाँ, technology तो वकास आपकी आवाज हमारे चॉपिंग ऑफ जो बच्चे बिट। जिनके लिए बना रहे हैं वो ये आपकी आवाज चॉपिंग ऑफ, इज दैट अदर पीपल आल्सो सीइंग दैट? के लिए अहम है। जी वकास, आपकी आवाज़ चॉप हो रही है बीच में, आई थिंक। कुछ इंटरनेट का इशू है मेरा ख्याल है। ये ऐसे ही बाकी सब लोगों की आवाज ठीक है, वीडियो सिर्फ बताता वकास हूँ। साहब की आवाज ठीक नहीं आ रही। सो सही है, अब आ रही है। अब आ रही है, बिल्कुल ठीक है। अब वो दोबारा से सवाल कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल वाज रियली आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। जी बिल्कुल सही। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि तीन चीजें हुई। एक तो ये कि आपने तीनों एलिमेंट्स के साथ काम किया, द नेटवर्क, द मर्चेंट्स, एज वेल एज द जो बैंक्स थे जिनके साथ आपने बनाना था। सो आपको एक मल्टी फैसेटेड अप्रोच बनानी पड़ी टू बेसिक ड्राइव इट। सो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जब आप नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं उसमें आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी होती है कि उसको उसके ऊपर पैटेंट बनाएं ताकि वो आप सिक्योर करें आपका जो एरिया है जिसमें आप लीड कर रहे हैं, ताकि कुछ अरसे तक आप उसके अंदर इनोवेशन कर सकें और आपका एक मोट बन जाए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेक्नोलॉजी पीपल टू अंडरस्टैंड। और अब जब वो सारा काम कर लिया, सो उसकी वजह से आपको आपका सक्सेस जो है ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। So these are important things for young people. एग्जैक्टली। Startup और की ये हमारे phases केस आते में हैं और phases आपके पास आपको एडवांटेज। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे केस में हम एक और नए प्लेयर आने थे इकोसिस्टम में, बिकॉज ऑफ मोबाइल पेमेंट्स, मोबाइल ऑपरेटर्स एंड मोबाइल डिवाइस वेंडर्स। तो इस लिहाज से जो है वो एट दैट टाइम नोकिया यूज्ड टू बी द लीडर, ग्लोबल लीडर ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, वी रिमेंबर इन 2001, 2002, or even 2005 time frame. So we started work with Nokia, and Nokia was a great partner. Nokia has also invested in us as well. Accordingly, we also started work with the mobile operators. So you have to look at the total ecosystem as required to make that transaction happen or make that solution implemented. And then you also have to look at it, how you're going to make it scalable. The scalables मतलब के easy to use it, easy to be onboarding, and easy to basically scale across people and across countries and across different geographies. So those were additional factors that we had to consider, and that we went through and made that happen. बहुत सही। अच्छा, तो ये तो अब आपकी जर्नी वीवोटेक पे हुई। उसके एज यू आर ग्रोइंग नाउ, आपके पास नए कस्टमर आ गए, आपके पास मार्केट आपकी बढ़ रही है। तो उसमें जब आप ग्रो इतना ज्यादा करते हैं तो उसमें किस किस्म के चैलेंजेस आते हैं? ग्रोथ में देखें, चैलेंजेस तो एक तो यही है कि भी एट द एंड ऑफ डे यू हैव टू लुक एट इट कि भी कंज्यूमर यूजेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कि भी अगर आपका सोल्यूशन जो है, दो हमारा बिजनेस मॉडल जो था B2B2C था, क्योंकि वी वुड सेल आवर सोल्यूशन टू द large players through the help of MasterCard, Visa, or Amex into the large retailers as well as to the banks to enable that infrastructure. But then the reality is at the end of the consumer has to use it. एंड कंज्यूमर्स यूजेज जो है वो भी कल्चरली आपको देखना होता है कि अभी जो आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन है वो उसको बेनिफिट कितना कर रही है। तो हमने जो देखा यूजेज जो है वो ज़्यादा कनाडा में पहले ज़्यादा हुआ शुरू, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा शुरू हुआ, और यूके में ज़्यादा शुरू हुआ बनस्बत यूएस में। वाई? यूएस में typical card payment was already made so much easy and widely acceptable. तो उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो यूज़र की अडॉप्शन है वो ज़्यादा स्लो थी यूएस में। बनस्बत हमने देखा बहुत ज़्यादा तेज़ी से अडॉप्शन हुई कंज्यूमर्स की कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके में। तो वो चल रहा था, बिल्कुल सही चल रहा था। दूसरा प्रॉब्लम ये हमारा ये हुआ था कि जो एंड्रॉयड फ़ोन थे
By the way, we also worked with the Google as well. We had a contract, and then they licensed some of our patents as well. It was a pretty nice, big size deal with Google. But through that path, Android phones were enabled, but Apple was not enabled with NFC. देखें अब ये 2012 की बात है, NFC जो आईफोन जो है वो स्टिल लैकिंग NFC. तो उसकी वजह से भी ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर प्लस माइनस जो है वो आईफोन का है यूएस में, तो उसकी वजह से भी कंज्यूमर अडॉप्शन जो है वो आहिस्ता थी. तो वो जो है वो वाज 2014 में जाकर जो है वो आईफोन 6 आया जिसमें NFC था. So it was a little late on the game, and in the meantime, basically 2012 के end में we did sell VivoTech to Mastercard. So Mastercard acquired us, and we had taken about $98 million investments from different. We had Klein Perkin, not Klein Perkin, so DFJ invested in us. We had Alloy Venture was the first investors. We had not only Nokia invested, Sprint invested. So multiple very good big strategic partners had invested. Citibank had invested in us. They in fact led the round as well in the third round. And so with the $98 million invested and everything, for them to wait another 2-4 years and for iPhone to come through. So we said, okay, let's just put it back onto people who can continue the momentum. So we basically sold the company to Mastercard in August 2012. Very good. So आपके उस वक्त आपने दो स्टार्टअप में उस वक्त तक आपने काम किया और दोनों की दोनों माशाल्लाह सक्सेसफुल हो गई. माशाल्लाह. तो अब आप देखेंगे टुडे जो है वो 2.5 billion people are using our technology. Well done. Globally. I would say thank to COVID as well. COVID gave another value proposition, even in the US, because people didn't want to hand over the card or, so they started tapping, and mobile payment also took off during that time as well. But however, now, it's growing. अगर आपने देखा होगा इवन पाकिस्तान में जो है ज़्यादातर लोग जो टैप करते हैं कार्ड बजाय इसके इंसर्ट करने के जो होता था पहले. So that's in a functional point of view, huge success. Financial point of view, I could have done better. There's no doubt. But however, तो उसमें वो ये वाली बात के ऊपर कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, बिकॉज मेरे हिसाब से जो आपकी कंट्रीब्यूशन है और जो उसकी आपने कहा कि 2-2.5 बिलियन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स उससे बड़ी चीज तो हो नहीं सकती. नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजी भी वो भी ना ऑलमोस्ट सेम 2-3 बिलियन के पीपल इस्तेमाल कर रहे हैं. तो आई थिंक दैट्स अनदर थिंग व्हिच इज सो इम्पोर्टेंट. You can, if you think big, and by the way, to think big and go after big things, it requires the same amount of time as you go after the smaller things. Obviously, challenges that but how if you follow this 80-20 rule and low-hanging fruit rules, you can really boil the ocean over time, not overnight. You have to go phases by phase 1, phase 2, but you can really think big, which you have to in a startup environment. लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन माय व्यू, पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी भी बहुत छोटी है. कोई भी स्टार्टअप को जो है ना वो पाकिस्तान को खाली सर्व करते हुए दिक्कत होगी कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, नंबर 1. और दूसरा ये है कि कोई भी स्टार्टअप उसको इन्वेस्टर भी आना जो है वो चैलेंजिंग होगा. सिर्फ कुछ होंगे जो कि यूनिक हैं और बहुत, जैसा पांडा है, पांडा एक्सप्रेस है, शायद वो आई थिंक दे हैव ग्रैब्ड अ प्रीटी गुड मार्केट शेयर एंड एवरीथिंग. दोज विल बी इन्वेस्टेबल. बट आइडियाज़ जो हैं वो आपको ये सोचने के कैसे ग्लोबली सर्व करना है. तो मैं लगातार स्टार्टअप को ये कहता हूँ कि आप मस्ट नीड टू थिंक how you come up with a unique solution that's going to serve the global market. But you start with Pakistan first. You get the solution made for Pakistan. You make it work in Pakistan. You get attraction. Once you have that thing, go to Middle East, then go to North America. And that's how I've been working with the different, at least startups, and I've been helping in that regard. नहीं, बिल्कुल सही है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. बच्चों को ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, यंग पीपल को, कि प्रॉब्लम्स तो आपको पहले फिगर आउट करनी है.
then it has to be a pain point. ऐसे नहीं है कि थोड़ी सी उसकी अफादियत हो, पेन पॉइंट हो, और अगर उस पेन पॉइंट को अगर आप सॉल्व करेंगे, उसको आप एक लोकल पैराए में सॉल्व कीजिए पहले, और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, बट उसका जो ग्लोबल इम्पैक्ट होना चाहिए, ताकि वो बड़ा प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यूएशन, आपकी मार्केट, आपकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत बढ़ सकती है. सो हमें उन बच्चों को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि ये सारे चीज़ों को ज़रा ध्यान में रखें. और वो पहले आपने एक चीज़ बीच में शुरू में बोली थी, MVP, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द यंग पीपल टू नो एज वेल. MVP का मतलब है कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. जब आप शुरू में एक स्टार्टअप बनाते हैं तो आपको एक उसका सबसे एक बेसिक वर्जन पहले बना के उसको इम्प्लीमेंट करके उसको सारी मार्केट में दिखाना है कि भाई ये हम कर सकते हैं, कर रहे हैं, और उससे उनका फीडबैक लेके देन उसको आप एक्सपैंड करेंगे इनटू अ रियल प्रोडक्ट. सो वो ये वाले कॉन्सेप्ट जो है स्टार्टअप्स के लिए बहुत अहम है, और यंग पीपल को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए एज यू हैव गॉन थ्रू इन योर लाइफ. वेल समराइज, बिल्कुल सही कहा आपने. अच्छा, तो जब आपने ये आपने मास्टर कार्ड को बेच दी कंपनी, तो उसके बाद आप मास्टर कार्ड के साथ रहे कुछ अर्सा, या मैं एक साल रहा. एक साल रहे. एक और कंपनी को एंगेज किया था उसी के तहत, जो है सीक्वेंस सॉफ्टवेयर. देन बिकॉज हमारे कमर्शियल कस्टमर्स थे ना, सिटी बैंक हो गया, बैंक अमेरिका हो गया, सम ऑफ दीज लार्ज insurers and the large retailers, we want to maintain that continuity, and so I stayed there for 1 year. Then in December 2013 then I resigned from that Sequence Software, and basically I decided that go to the next area. Next phase. Yeah. बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. So you are 2 out of 2 at that time, 100% बैटिंग एवरेज है आपकी. और उसके बाद what happened next? 2013 then it was interesting. So it took a few months off. Then in April 2014 then I had a lunch with Bill Melton. Remember Bill Melton? Bill Melton आपकी जिंदगी में वापस आ जाते हैं कहीं ना कहीं से. By the way, Bill Melton came to my wedding as well in Karachi. So I do give a lot of respect. He's one of my mentors as well. So, great visionary, but he also taught me and another boss I had, Tom Aiden, how to think strategically. Because the big differences are made once you think strategically. Tactical things would allow you to achieve things on a short term, but strategic moves, I think those are the ones that drives that. So that's what I learned from him. And then there was another individual who I worked with in Verifone days, was Ashok Narashman. He was the founding CEO of Wipro. Achha. Wipro is also very big. So three of us, we decided to co-found a company. Called Omni. We called it OmniPay first, then we made it OmniWay. And that was really to drive a seamless shopping experience in the physical stores as well as online. So seamless, अगर आप देखो ना कि भी जो Amazon, there are multiple factors Amazon became successful, but one of the most important things that made Amazon successful, they introduced one-click buy concept. They made it so easy to make a purchase online with your mobile device or with your PC or through web interface. And that is drove that. So basically, we wanted to bring that kind of seamless experience to all other merchants, whether e-commerce merchant and the physical merchant. And so that's what basically drove OmniWay. As we were doing, and we were taking good traction, and we brought WeChat Pay acceptance in the US as well. We developed a Kohl's Pay. That Kohl's is a very large department store here in the US. They introduced Kohl's Pay through their mobile payment side of things, and then we also marketing aspect of things through their Kohl's app. Then we also developed, working with the PayPal and Kohl's, what I call, we used to call Zap Buy, which is one-touch buy from ad. So you like a product and you just click on that product and then and complete the purchase. So one-click buy from, and that's through that path of implementation. The PayPal, in fact, introduced that concept to the social media partners as well. So now it's widely being used in OmniWay.
But then we were doing well, and we had a good investment as well from interesting investors. And then COVID came in. अच्छा Because COVID, all of the merchants' traffic went down. And so that basically, it just brought a huge interruption in our value proposition. And so we lost the momentum. We tried to bring that from the physical store to consumer sitting at home and on video and interactivity. But that didn't get a good traction that much because people were still not in the physical stores and everything. But the point is, and we basically that I would not call it as a big success in that regard. So nature played a role into it. So we said, okay, yeah, I was the youngest one among the being 64, 65 among three co-founders. So we said, okay, let's just roll that one. And so we have done. नहीं तो ये भी सही है. देखें, जिंदगी में सक्सेसेस होंगे जो आपके हुए और फेलियर्स भी होंगे. अब उसकी वजह कुछ भी हो सकती है और हमें वी हैव टू बी एक्वानिमस विद दैट, बिकॉज़ हमें पता हो कि भाई दोनों चीजें हो सकती हैं, बट यू गो इनटू दिस विद दैट नॉलेज ऑलरेडी कि भाई ये सक्सेस भी होगा, फेलियर भी होगा, लेकिन आगे बढ़ते रहना है और नई चीजें बनानी है. सो दैट्स वेरी गुड. आई थिंक हमने बहुत क्लियरली बात कर ली. अब मेरे ख्याल में हम कुछ सवालात ले लेते हैं. कुछ लोगों ने नहीं, मैं थोड़ा सा एक और ऐड कर दूं. जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट है एज पार्ट ऑफ अ जर्नी. So now that I have learned a lot of things about how to make the startup and everything, so this was a time जब आप next 63, 64 के हो जाते हो. So this is around that time जब मैं 64 का. So then I started thinking, okay, what's next, right? So to me, looked at was more important to what I have learned to give back to Pakistan. जी. I think at the end of the day, we receive all the education from Pakistan that enable us to be in what we did accomplish in the rest of the life. And so that's how I started basically into this effort of what became Aspire Pakistan with the founder of Hassan Syed, who was already on that path. He called me and I said I resonated. So Aspire Pakistan to really enable the startup culture in Pakistan. So that's what we're doing. Within there, shortly, that I recognize that early stage startups they have ideas, they really bootstrap, but they don't get funding because there's no culture of angel investment in Pakistan. So that's how I started Park Angels. That how we can help these startup first filter few startups out of the good one, out of the many really good ones, and then help them to not only guide the best practices, what we learned from Silicon Valley, number one, and then also guide them how they can get invested and become investable. So that's what Park Angel's been doing. While we were doing that thing, then generative AI came in. I saw that generative AI could be a game changer as mobile was or as the internet was. In fact, generative AI is bigger than all of that thing while utilizing this thing. And so decided that we gonna, first I went to PC and other one that they need to introduce training in generative AI when I saw things not moving fast enough. So basically I introduced this generative AI training to a lot of students, but my objective was 100,000 student professionals and freelancers and faculty and everyone. And that's the path we've been on as well through Park Angels to how we can enable. And we, working with the LF USA, we also ran this program for UET Lahore. That was excellent. And we did the cohort 2 as well. And hope this thing will continue on that side of thing. But I think that's also another message that is Pakistan is the strongest asset Pakistan has is the people. And within there, 65% of our people are youth below 35. That's our biggest asset. All we have to make them more skillful. If we can make them skillful and more productive, Pakistan will be hugely productive. As we saw China is happening in China and then also India. And one day it will happen in Pakistan as well, inshallah. Excellent, excellent. मेरे पास आपके लिए एक दो सवालात हैं, ऑलरेडी लोगों ने भेजे हैं, मैं आपसे पूछता हूं. पहला सवाल यह है कि भाई आपका मैसेज और एडवाइस क्या है यूईटी के स्टूडेंट्स के लिए? मेरे तो यही है कि एक तो जैसे आप स्टडीज कर रहे हो, try to learn what you are there for.
लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख, मैं बीइंग वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जब मैंने पास किया तो यूटी लाहौर से, इट वाज मोर ऑफ इन द मोड ऑफ पास करना है rather than learning. When I came to the US for the master degree, I clearly remember that the first 6 months I was in a learning mode because the gap was so huge. And then realized that learning is more important than anything else also. अगर आपने लर्न नहीं किया यूनिवर्सिटी में आके, तो आपने सब पास करके चले गए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और उसकी वजह यही नज़र आती है कि भी ये जो जनरली जो है पाकिस्तान में 70-80% ऑफ द पीपल दे आर नॉट एम्प्लॉयबल because they don't have a good grasp of the degree they have achieved. Number one. Number two, लर्न के साथ आप सब बेस्ट लर्न करते हो, आप हैंड्स ऑन उसके साथ एंगेजमेंट होनी चाहिए, जो भी आपके फील्ड में है, चाहे केमिकल में हो, सिविल में हो वगैरह, आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हासिल करें। अच्छा, जनरेटिव एआई इट मेक्स इट लॉट मोर ईजिली गिव यू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस योर रेस्पेक्टिव फील्ड। तो अब आपके पास एक टूल भी आ गया है, जनरेटिव एआई सीखें आप। जनरेटिव एआई के ज़रिए आप हैंड्स ऑन बनेंगे। जब आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्व करने का अपनी रेलिवेंट फील्ड में, डजेंट मैटर चाहे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मेटलर्जी हो, टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्ट, डज नॉट मैटर। जनरेटिव एआई इज सॉल्विंग प्रॉब्लम इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। वो आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नॉट ओनली आई विल गिव यू आइडियाज़, how could you come up with ideas not only for a final year project, but also you could decide to take it forward as a startup. But then also those implementation you would do become easier for an employer to understand. So your employability is going to really boost drastically by learning through hands-on, especially with the tools like generative AI, जो कि आपके employer कोई भी होगा, they will what they would be hiring is more generative AI enabled people than otherwise also. लास्ट थिंग ये है कि जो अगर आपके पास अच्छा आइडिया है, उसको पैशन के साथ लेके चलेंगे, इवन एज ए स्टूडेंट्स यू कैन डू दैट थिंग एंड यू कैन मेक दैट सक्सेसफुल। बहुत अच्छे। सो ये बहुत अहम चीज़ें तीनों आपने कही। पहली दो तो सेल्फ एविडेंट थी जो कि आपने कही, पर तीसरी बात भी अहम है कि अगर आप, पहली बात, आपको चीज़ें करनी सीखनी चाहिए। नंबर सिर्फ लेने के बजाय सीख लें चीज़ को, उसका कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में क्लियर होंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में, जो इंजीनियर होते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर्स, आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर आपकी अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर आप बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी बड़ी बड़ी बन जाएगी, अगर छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी छोटी बनेगी, दैट्स फाइन। दूसरी बात यह कि जब आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो आपके पास, आपको फंड रेजिंग भी हो जाएगी, आपको और लोग हेल्प करेंगे। उसके लिए अगर आपको टूल्स इस्तेमाल करने हैं तो टूल्स आपकी अपना दिमाग है, आपका नेटवर्क है, और आप जनरेटिव एआई टाइप चीज़ों को इस्तेमाल करें, दोज बिकम टूल्स फॉर यू, कि आपकी अपनी सक्सेस में वो एक आपको बूस्ट कर देते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमारे यंग लोगों को अपने दिमाग में रखनी है टू गो फॉरवर्ड। सो दोज आर एक्सेलेंट मैसेजेस। आई थिंक वी आर रनिंग ओवर टाइम, so I am going to say a very big thank you to Anwar Khan Saab to join us today on TechCast for Alif USA. और हम इंशाल्लाह आफ्टर अ फ्यू मंथ्स उसके बाद अगर अपने राउंड सर्कल में दोबारा आए तो आपके पास फिर वापस आएंगे। थैंक यू अनवर साहब। एवरीबडी, थैंक यू वेरी मच टू जॉइन अस टुडे। हमारा ये टेककास्ट जो है उसका एक्चुअल इनॉग्रल सेशन अक्टूबर 1 को वेडनेसडे को 8 बजे पाकिस्तान टाइम पे होगा, जिसमें विल बी अनदर वंडरफुल गेस्ट दैट विल अनाउंस, एंड we will keep doing that on a consistent basis, so keep tuned. Thank you very much. Thank you. Allah Hafiz. ओके, सही है। आई थिंक ये लाइव हो रहा है तो इसमें अटेंडेंस तो बहुत थोड़ी क्यों है अभी? सर अभी तो हमने, वी आर जस्ट डूइंग टेस्ट्स, सो अभी हम इसको प्रमोट तो वो अक्टूबर वाले से करना शुरू करेंगे। दीज आर जस्ट टेस्ट केसेस, ताकि हम ये